Okay. So dear students, now we are discussing about angle sum. Angle sum नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको. Angle which everybody knows. Sum का मतलब होता है total. So there are two kinds of angle in any figure. First of all, suppose I am giving you a normal example of a triangle. So triangle has three interior and three exterior angle only. Remember, किसी भी फिगर में अगर नंबर ऑफ साइड जितनी होती है उतने ही उसमें इंटीरियर एंगल होते हैं और उतनी ही उसमें एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं. ठीक है. सो इफ यू टॉक अबाउट इंटीरियर एंगल, देयर आर थ्री इंटीरियर एंगल. इफ यू टॉक अबाउट एक्सटीरियर, अगर हम हर एक साइड को एक्सटेंड कर दें, सो यू कैन सी, आप इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो और आप इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है. सो यू हैव three angles inside, that is called interior angle, and the same way you have three angles outside which is called exterior angle. Now remember always, in any of the polygon, whether it is triangle or quadrilateral or penta or hexa, any of the quadrilateral, remember, sorry, any of the polygon, remember they are having interior and exterior angles. Now sum of interior angle, sum of interior angles varies according to the sides. कितनी साइड्स उस फिगर में है ये उस पे डिपेंड करता है कि उसका जो इंटीरियर एंगल का सम है वो कितना होगा. सो रिमेंबर, देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर इट, दैट इज n minus 2 into 180 degree in the form of multiply. Once again repeating, n minus 2 in the bracket multiply by 180. Okay, now let me tell you why it's 180. It's just 180 because सबसे छोटा पॉलीगन इज ट्राइंगल. ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180. सो हम जो भी पॉलीगन बात करते हैं, लाइक इट्स अ क्वाड्रिलेटरल हो या इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स अ पेंटागन, हेक्सागन और हेप्टा और एनी, सो रिमेंबर दैट ट्राइंगल के फॉर्म में उस पार्ट को डिवाइड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल देती हूँ, जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपने लिया, तो क्वाड्रिलेटरल को आपको पता है, आप अपने दिमाग में ये सोच कर देखिए कि इस क्वाड्रिलेटरल को हम कितने ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं. सो यू कैन सी वी कैन डिवाइड इट इन टू ट्राइंगल्स. इट हैज फोर साइड्स. वी कैन डिवाइड दिस फिगर इनटू टू ट्राइंगल्स. ठीक है, टू नॉर्मल ट्राइंगल्स व्हिच यू टॉक अबाउट. सो इसका सम हुआ 180, इसका सम हुआ 180 और इसका सम हुआ 180. इट्स टॉकिंग अबाउट 180 and 180, 180 when you talk about it will give you here 360. So total sum होता है इसका 360. Remember, इसका total sum होगा यहाँ पर 360. Now remember, it is talking about like a pentagon, hexagon, कितने triangles के sum में आप उसको divide कर सकते हो. It's just a normal concept. Otherwise, remember the formula always. n minus 2 multiply by 180 degree. This is the formula for finding out the angle sum in any polygon. It's about interior angle. And remember, exterior angle is always fixed. Exterior angle sum will always be fixed, that is 360 degree. So for remembering exterior angle will not be a big task because it will be fixed in every figure. But when you talk about interior, it will change according to the sides which it is having. Okay, so now let us try for one figure, that is pentagon. Now every one of us knows pentagon has number of sides 5. ठीक है, पेंटागन की टोटल साइड्स कितनी होती है 5. So if you want to find out what will be the angle sum in interior, so remember 5 minus 2 multiply by 180 degree. That means 3 multiply by 180 degree. So when you will multiply it, you will get it 540 degree as the angle sum of pentagon. Okay, so just you need to put the value in n minus 2 into 180 and you will get the angle sum of that particular figure. ठीक है, so let us try more questions which I am giving you right now.
Okay, so students, let us try the same pattern of finding angle sum for a figure which is having hexagon. ठीक है, let us find out for hexagon. Hexagon means a polygon having 6 sides. Okay, a polygon having 6 sides, and remember, if you are talking about 6 side, that means 6 minus 2 multiplied by 140 degree. So 6 minus 2 means 4 into 100, 80 degree, and you are knowing 18 2 ja 36 and 18 4 ja 72. So it means it will give you 720 degree. अब इन एंगल सम का यूज कहाँ करना है बेटा, दैट आई विल टेल यू फर्दर इन द क्वेश्चंस. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट इंटीरियर एंगल सम. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड बेटा, जितनी ज्यादा साइड्स होती हैं एक इंटीरियर एंगल उतना ज्यादा होता है. वंस अगेन टेलिंग यू, जितनी ज्यादा साइड्स होती हैं इंटीरियर एंगल जो होता है वो उतना ज्यादा होता है. But remember always, it is just opposite in different case. Now let me tell you what is opposite in it. Now remember, interior angle will be more as the number of sides will be more. Please keep in your mind this line. ठीक है, इंटीरियर एंगल उतना ज्यादा होगा बेटा जितनी ज्यादा उसमें साइड्स होगी. लेकिन यही सेम चीज ऑपोजिट हो जाती है एक्सटीरियर एंगल में. ठीक है, व्हाट इज ऑपोजिट नाउ, रिमेंबर, जितनी ज्यादा साइड्स होंगी इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू उतनी ज्यादा कम होगी. ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बात कर रहे हो ना. लेट मी टेल यू हाउ. सी, सपोज यू हैव अ फिगर that is a regular figure. Regular means you are knowing each angle will be equal. Each angle will be equal in you are talking about any regular figure. Suppose I told you there is a regular figure having 18 sides. Okay, and there is another regular figure having only suppose 5 sides. ठीक है, I am writing here number of sides. ठीक है, so there is a figure having 18 sides and there is another figure which is regular having 5 equal sides and यहाँ पर 18 equal side. Now suppose the question came that you have to find out what is the measure of each exterior angle. What is the measure of each exterior angle? This is one of the most coming question I am telling you. सबसे ज्यादा आने वाला question है ये. ठीक है, what is the value of each exterior angle in a polygon which is a regular polygon. Okay, now remember, as I have told you that exterior angle is fixed beta. ठीक है, exterior angle sum is fixed. What is the sum? Just now taught you, it is 360 degree. It is fixed, it will never change. Okay, 360 degree is fixed. Now the question is asking what will be the value of each exterior angle. Now what you need to do, just simply divide it. 360 divided by number of sides. Number of sides means 18. Okay, now 20 degree for first case. Okay, for first case each angle will be 20 degree. Each exterior angle will be 20 degree. Whereas in second case 360 upon 5, and you can know, you are knowing it, 5 sevens are 35 and 5 twos are 10. Now 72 degree. Now look at here in the question properly, that when I gave you 18 sides, the sides were more, so the each angle value was less. When the sides are less, then the each angle value of exterior is more. So remember, जैसे जैसे आपकी number of sides बढ़ती हैं वैसे वैसे एक exterior angle की value कम होती चली जाती है. ठीक है, so this you keep in your mind. And one more concept which I want to tell you, please remember this, that हर एक interior हर एक exterior से मिल करके 180 बनाता है. Now let me tell you by the figure. समझ लीजिएगा इसको. Look at here, giving you just example of a triangle only, because triangle is very familiar figure to you. So suppose this is interior angle. Look at here, this is interior angle and this is exterior angle. See this, are you getting the formation of straight angle?
or you can also see that is a linear pair. This is a linear pair and you are knowing these two angles will give you the sum 180 degree. So remember always, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में उसके एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू पता हो और आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी हो, so just you need to subtract from 180, you will get the value of that exterior angle. और जैसे आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी, you can put in the formula and you can find out number of sides also, and you can find out the angle degree also. Remember, this is a very good concept and you will get this type of question not in NCERT, you will get in RS Agrawal. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आरएस में मिलेंगे, एनसीईआरटी में बहुत कम है ये वाला. ठीक है, सो आई एम ओनली टीचिंग फ्रॉम आरएस अग्रवाल राइट नाउ. चलो, सो लेट अस ट्राई क्वेश्चन ऑफ इट. Okay, so students, if you will see on the board, you will find out all important formulas which we will discuss right now here. The first concept is that whether you talk about any of the polygon, whether it is you are talking about regular polygon, irregular polygon, any kind of polygon, or you can have any number of sides. You can also have 18 side, 20 side, 30 side, no matter. Remember, the sum of exterior angle will always be fixed, that is 360 degree. This is first concept. Second concept you always remember is when you talk about one interior angle, कोई भी एक interior angle उठाइए और उसी का exterior angle अगर आपको निकालना है तो you will just subtract from 180 because one interior and उसी का exterior मिला करके they will always give you the sum 180 degree. Third concept is if you have to find out exterior angle value in polygon. I am talking about each exterior angle, not sum. Angle sum के बारे में बात नहीं हो रही है बेटा, यहाँ पर बात हो रही है एक exterior angle की. So if you have to find out one exterior angle value of regular polygon, you have to just subtract 360 degrees. You have to just divide 360 degree by n. N means number of sides because each angle will be fixed only. ठीक है, बिकॉज रेगुलर फिगर में सारे एंगल इक्वल होते हैं. सो यू विल जस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स. देन द सेम फॉर्मूला अगर आप उसको जस्ट रिवर्स कर दो, देन द फॉर्मूला विल बिकम नंबर ऑफ साइड्स अगर आपको निकालनी है रेगुलर फिगर में. सो यू जस्ट डिवाइड 360 डिग्री बाय ईच एंगल्स वैल्यू और मेजर ऑफ ईच एंगल इन दैट रेगुलर फिगर. Wait for 1 minute. अच्छा, ओके. So students, I gave you a question right now that was you have to find out the value of each interior and each exterior angle of a regular polygon which is having 18 sides. Okay, 18 sides. So सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं एक्सटीरियर एंगल तो हमको इंटीरियर एंगल बड़ी जल्दी मिल जाएगा. So according to the question, you are knowing the value of each exterior angle value will be 360 degree upon n. So 360 degree upon n. N means I told you 18 sides. Now you get 20 degree. The value of each exterior angle. Now remember, value of each exterior angle will be 360 degree upon 18 which will give you 20 degree. So 20 degree value आ गई बेटा exterior angle की. Now we want interior angle also. Now if you remember, I told you if you have to find out the value of interior angle, just what you need to do, you have two things because number of sides I have already told. So आप वाले फॉर्म से भी कर सकते हो कि एंगल सम निकाल के you will divide that. It can be also possible. And second thing is that it is written here value of interior angle. So आपको पता है एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर मिला करके you will get always 180. So you will have 180 minus 20 degree. So the another angle that will be interior will be 160 degree. Okay, so the angle value will be 160 degree. So 160 plus 20 added together will give you here 180 degree. That's it now.